आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं हमारे गेस्ट और पॉडकास्ट किस बारे में है वो चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते टाइम वो ठीक से नहीं हो पाया था। एक चीज़ जो हम किसी भी कंट्री, बीट जापान, यूएस, कोरिया, किसी के भी बारे में अप्रिशिएट करते हैं वो ये है कि वो अपने कल्चर एंड हेरिटेज को किसी भी मीडिया के थ्रू, लेट्स से मूवीज, एनिमेशन, टीवी सीरीज या फिर कोई और मीडियम के थ्रू काफी अच्छे से दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं और हमें भी वो चीजें जानकर काफी अच्छा लगता है। सिमिलरली इंडिया में भी हमारा कल्चर काफी रिच है, कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं और कितनी सारी फोक स्टोरीज हैं जिनको हम अलग अलग मीडियम्स के थ्रू कितने सुंदर तरीके से दुनिया के सामने लाते हैं और दुनिया भी हमारे कल्चर को काफी एम्ब्रेस करती है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी ना जाने कितनी चीजें हैं जिनको कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। उनमें से ही एक है उत्तराखंड का एक पॉपुलर फोक फेस्टिवल फूल देई। ये फेस्टिवल सालों साल से उत्तराखंड में मार्च और अप्रैल के मंथ में स्प्रिंग सीजन के टाइम मनाया जाता है। देहरादून उत्तराखंड से एक एनिमेटर एंड फिल्म मेकर हैं जिनका नाम है कार्तिक महाजन, जिन्होंने इस फेस्टिवल की खूबसूरती को अपनी एक 7 मिनट की शॉर्ट फिल्म में दिखाया है। फूल देई एक ऐसा फेस्टिवल है जो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, क्योंकि लोग जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज की तलाश में बड़ी सिटीज में मूव कर जाते हैं और उनका कल्चर कहीं पीछे छूट जाता है। और ये फेस्टिवल उस लॉन्गिंग को कैप्चर करता है। एंड बिलीव मी, ये सिर्फ 7 मिनट का है, बट इट हैज द पावर टू लीव अ वेरी लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन यू एंड एक्चुअली मेक यू क्राई। बट तुम 1.5 से 2 घंटे का पॉडकास्ट एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म के बारे में क्यों देखोगे जो सिर्फ 7 मिनट की है और ना जाने किस अनजान फेस्टिवल के बारे में है। वेल, कार्तिक NIT पास आउट हैं और ये उनका फाइनल ईयर ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट था जिसको अब तक 40 फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया जा चुका है। यस, इट इज गेटिंग नॉट ओनली डोमेस्टिक बट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज वेल। रिसेंटली ये टोक्यो में होने वाले डिजिकॉन एशिया 2024 में भी नॉमिनेट हुई है, representing India. This is representing Indian animation in Japan. So yes, as an Indian, you should be interested in this amazing work and the young aspiring artist Kartik Mahajan who is behind this short film. इस particular podcast में हमने उनकी पूरी जर्नी के बारे में बात की, from being an artist to an independent filmmaker and animator, what struggles do Indian animators generally face, animation की इंडिया में currently क्या state है, और तुम लोगों के भी जो animation related question थे जो तुमने community post पर डाले थे वो सभी हमने उनसे पूछे हैं। इस पॉडकास्ट से तुम्हें काफी कुछ जानने मिलेगा अबाउट द एनिमेशन प्रोसेस, लाइफ ऑफ एनिमेटर्स एंड द स्टेट ऑफ एनिमेशन इन इंडिया। तो हो सके तो इसको एकदम एंड तक सुनना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुमसे जानना चाहूंगा, फूल देई का मतलब क्या है? अच्छा, फूल देई तो फूल देई एक फेस्टिवल है जो हम उत्तराखंड से मनाते हैं। तो आई माई सेल्फ आई एम सिटिंग इन देहरादून राइट नाउ। आई एम फ्रॉम देहरादून। तो ये एक फेस्टिवल है जो फ्लावर्स का है, मतलब कहने को बहुत प्यारा सा फेस्टिवल है जिसमें चिल्ड्रंस आर कॉल्ड फुलारीज एंड दे गो आउटसाइड अर्ली इन द मॉर्निंग टू कलेक्ट फ्लावर्स फॉर देयर विलेज एंड दे ब्रिंग ऑल द फ्लावर्स बिफोर द एल्डरलीज आर अप। तो पूरा विलेज डेकोरेट करते हैं मतलब फ्लावर से, एंड टू वेलकम गोगा माता। इट हैज अ mythological element to it, but as a festival itself, it's a very unique festival that our state has. But slowly we have forgotten celebrating it. So this film is also about talking about this and why we are not celebrating it, what is happening in the state, also selling the USP of our state, that is value of flowers. तो पूरा फूलों की कहानी है और वो फूलों की ही जुबानी है। एंड एक और चीज जो स्टैंड आउट की वो था जो गाना उसमें फीचर्ड है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था इमोशनली उसको एलिवेट करने के लिए। वो मतलब कैसे पार्ट बना इसका? So this was like a self-funded student film. Graduation project था basically मेरा। It was not my graduation project. It was more like a student project पहले तो, फिर बाद में वो graduation project बन गया। But I didn't have any money to make a film. ना कोई गाना मेरे को आता है, ना गाना ना बनाना आता है। I'm very bad with music. So I started cold mailing people कि भाई मैं कुछ बना रहा हूँ ये वो। And there is this very beautiful band. It's like one of the most famous band from Uttarakhand. They are called Pandavas. So like randomly they just saw one of my concept art, and then I got the opportunity to meet them, and I went to Ishan भैया and told him कि like मेरे को अभी फिल्म बनाना है, एक बनाना है, अभी मैंने बनाई नहीं है, but like आप अगर गाना दे सको, मतलब उनका एक गाना है फुलारी, that is the song that we use in the film. And I showed them all the concept art, told him कि मेरे को कुछ बनाने लगा। I don't have any money. मेरे को स्टूडेंट फिल्म है। So luckily he trusted me, and then he gave me the rights for the song. And yeah, it's something like the song itself is like
telling that same story. हाँ. If you like see the lyrics, Yeah, it's also yeah. communicating the same idea. Yeah, I was fortunate enough to get in contact with those people and lucky enough to get those rights. तो Yeah. वो थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ता है. Why? And so how did you get into art? Like, what was the story? बेसिकली ये तो सबका होता है, मतलब जिससे भी आप मिलोगे. बचपन से ड्राइंग पसंद है, पढ़ाई में वीक है, तो ड्राइंग का शौक लग गया. But I would like to specially talk about animation itself. For me, animation was something that I never tried. I made my first film when I was in foundation. It was a decent film. But then I was researching about Indian animation history, and there's one person, Arnab Chaudhary. He's a Yeah. legendary animator. Oh, So listening to his story, watching his film was something that really inspired me. That's why like Phool Dei itself is a tribute to him. And maybe he was the person who actually welcomed me in that world of animation. And that's when I decided like I also want to make a film, animation related only, or like animated film. So yeah, like that was something जहाँ से start हुआ था. And I used to draw a lot of caricatures, cartoons of people, and I love teaching. So there are a lot of NGOs in Dehradun. So 1 year I was taking a drop year to prepare for NID after college. I used to make caricatures for 20 rupees and save up money to do workshop for those kids. So that is where something that triggered me कि अच्छा करना तो यही है, मजा इसमें ही आ रहा है. तो वो करता था मैं. Wow, that's just amazing. Okay, so that's the root story of yours, right? Okay, so next मेरा एक और question ये भी था कि in जितना हमने देखा, right, in the movie Phool Dei, I saw, like, my question is, एक वो जो ghost वाला जो figurine जो था, right, it was a character. My POV is like I completely didn't like understand it. Like पूरा समझ नहीं आया, मेरे को थोड़ा समझ में आया. But what's the explanation for that ghost? Okay, so earlier it was something else for me. It was more like I told you when I was telling you about Phool Dei, तो गोगा माता को welcome करने के लिए. So it was more like a spiritual figure that I wanted to add in the film. But later I realized like apart from playing from mythology, I can like what if we give a shape to a mountain? What if there is a spirit of mountain? So उसका पूरा character is like kind of metaphorically showing a पहाड़. तो उसका जो टोपी है इट्स मेड ऑफ आइस, उसके बाल जो हैं वो बादल के बने हुए हैं, फ्लोरा फॉना इन द मिडल एंड रिवर गंगा ऑन द बॉटम. सो बेसिकली इट्स सिंबलाइजिंग उत्तराखंड इन अ वे, एंड that is where the form derived from. I can like definitely share some concept art with you, so like that will help you to अच्छा कि ऐसे. That okay, now I get it. We are talking about that god character, ना वो जो पानी में से बाहर आता है. हाँ, wait. That is not a ghost. That is how do you define? No, I mean no. It was. See the color scheme, right? मैं बता रहा था ना उस time पे. Like I love the color scheme in the movie definitely, but जब वो वैसे आया ना, वैसे like ऐसे करके आया, तो मेरे को ऐसा लगा कि Casper, right? Yeah, Casper, I know. So Casper, I know. वैसा वाला थोड़ा सा मेरे को, फिर मैं 2 मिनट से फिर मैं तभी मैंने क्लियर करने के लिए पूछ रहा हूँ, wait, was I like getting something wrong or like that? But okay, yeah, I'm just looking at your background right now because मैंने पता एक चीज नोटिस करी थी, and personally for me when I watched the movie, the thing that caught my eye was the color, जो usage of जो colors जो था ना, इतना मस्त था. Like it was somehow calming, but like Tarun bhai said, right, it was nostalgic in a way. और जब मैंने खत्म करी, when I fully watched the whole movie, it left me like yeah, थोड़ा और देखिए, और थोड़ा सा और देखने को मिल जाए. तो कार्तिक, सबसे पहले तो मूवी के लिए तुम्हारे अभी क्या प्लान्स हैं, तुम्हारी शॉर्ट फिल्म के लिए? अभी तुम जापान जा रहे हो, तो इसी को की स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हो ना? हाँ, yes. अभी film festival, like we are sending it to film festival. So luckily अभी तक we have got into 42 film festival like all around the globe. So we had different premieres in different countries. और अभी like it got selected, like it won in Digicon
Asia. Like it won Asia, India gold, I guess. So they have invited me to Japan for the finals. So uske liye I'm going. We had our international premiere at on like in world's second oldest film festival, that is Moscow International Film Festival. So that is where we started from. So second thing, if I would have changed in the Phool Dei was, I am taking a lot of time to answer this, but Fulla are like my favorite characters in the film. They are those squirrels characters. Yeah, in the start of yeah. फूल ला के देते I हैं want to tell the story behind them. I'm interested over there. So उसमें क्या है, like those characters, they are flying squirrels of Uttarakhand. They are actually like जो यहाँ पे हैं. So when I was writing the story for the first time in 2020, I heard this news कि वो extinct हो गए हैं. Like flying squirrels of Uttarakhand got extinct. And I was like, bro, I was just about to promote Uttarakhand and ये extinct हो गए हैं. And I want to involve them in the film as a tribute. They used to exist, right? So मैंने उनको include करा, I developed those characters and all. But film बनाते in 2023, when I was doing my secondary research, I got to know that they found 5 squirrels in Rajaji National Park. So the entire of those characters got changed for me. So now Fully are my favorite characters, because if you notice, if you will rewatch the film for the second time, you'll see the film starts with them entering the frame, and उसके बाद camera zoom in होता है. So those characters are representing hope. So the entire purpose of Phool Dei, they are representing hope, because they came back from extinction. Now they are hoping that these people who have abandoned this, villages might also come back. And that is where, like in the whole film, they are guiding me to a certain path or like to a certain location. That adds a whole new layer. Actually हमने ये पर्सपेक्टिव सोचा नहीं था, अब हम लोग को समझ में आ रहा है थोड़ा. That's why I wanted to talk about it. Like those are like, I had like a very deep meaning. Yeah, it's the detail like you mentioned कि squirrels actually were like guiding her. I was like, oh shit, अभी तो दोबारा देखना पड़ेगा, like rewatch the movie again. Yeah, my point was the same कि मतलब it sounds like one of those story मतलब theories मतलब बहुत stretch sound करती हैं, but those times they are not true. अभी squirrels वाला तो it adds a new layer. बड़ा देखना पड़ेगा. Seriously, like we missed it. We were focused on the हम तो anime वाले से like boy colors देखो. मिस की बात नहीं है. I don't think कोई इसको इतनी आसानी से कैच कर सकता है. कोई like बहुत ही ज्यादा सोचेगा, डायसेक्ट करेगा तो. and वो main character का design थोड़ा ऐसा था, मतलब क्या, like what is that golden color shape on her head? On her forehead. So film, the world is Dev Bhumi. It's happening in the fictional world of Dev Bhumi. So I wanted to give that larger than life, like attribute to them. So एक festival होता है उत्तराखंड में देसाई, जिसमें पूरे माथे पे they put टीका, and टीका is something like that connects with that kind of a place. So I gave that टीका sort of a shape to all the characters in their forehead, and that also connects to their nose. And it was something that I felt कि थोड़ा अलग बना रहे हैं औरों से. So that was like one decision as a creative liberty I took for those characters कि उनका नाक से टीका स्टार्ट होता है, and even the squirrels have it. Yeah. मेरे को तो पता था already, because I know, like मैं तो वहाँ से मैं रह चुका हूँ वहाँ पे, so I know.